Assalamualaikum everyone. We're back with another Yeah, video of Cric Tok, and we have a special guest today. Fahad Jalil is joining us. So, yeah. Assalamualaikum Fahad. Welcome to Cric Tok. Welcome. तो हमने कहा कि Thank you you. know there is a long wait till tomorrow, Pakistan England का match. उससे पहले there are two contrasting journeys to the semi-finals and then you know out of the semi-finals actually for टीम पाकिस्तान एंड टीम इंडिया. तो हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, आपकी ओपिनियन लेंगे कि यार स्टार्टिंग ऑफ विद पाकिस्तान, तो यार पाकिस्तान फाइनल में कैसे पहुंचा? दुआएं थी, कुदरत का निजाम था, लक थी, ऑल ऑफ द अबव? कैसे पहुंचा पाकिस्तान फाइनल में? I think all of the above. It had to be all of the above for them to get to the finals. नथिंग बियॉन्ड दिस, And कोई then, मेहनत कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यही है. okay, there's बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं इस पे. कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जिनके बारिश है उनके खिलाफ चली जाती है. कुछ टीम्स ऐसी ऐसी होती हैं जिनके फेवर में बारिश हो जाती है. I mean, besides 1992, even in 2009 World Cup, I remember there was one game that was washed out. I think when Yunus Khan was the captain. If I'm not sure if I'm wrong or not, but I think there was one game where, and that's how we strolled to the semi-finals of the 2009 T20 World Cup as well. तो उस तरह की बातें भी हम कर सकते हैं कि बारिश का भी फेवर था. And when it comes to South Africa, rain has always gone against them. So that was one bit. And I think amongst that Super Sunday last week, one team that was supposed to lose, if it had to lose, it was South Africa because they've had that kind of a history with themselves. But उसके अलावा, I mean, it was very frustrating being a Pakistani fan. मगर अगर आप देखा जाए तो एक मैच वो हारे हैं on the 240th ball of the match, the 40th over of the entire मैच, यस. game. And दो जो गेम्स दूसरा हारे हैं, मैच था, दोनों गेम जो में आखिरी दूसरा बॉल मैच पे हारे हैं. जो दूसरा मैच था वो भी आखिरी 2 बॉलों में हारे और 1 रन से हारे. राइट. तो चलो ठीक है, उसमें दे एक्चुअली प्लेड जनरली बैड, बट numbers wise they were not lagging behind, and then पहले everything मैच else. से स्कार थी टीम यार, पहले मैच पे उठी नहीं. मैंने ये जिशान को बताया था, मैंने कहा मुझे खबर मिली थी कि ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की कोई चाय में कुछ मिला हुआ था या कुछ था, उठ ही नहीं सके बेचारे. और वो दूसरा, कुछ लोग खान साहब को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं यार वो लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी कि वापस आ जाओ, तो टीम ने कहा चलो छोड़ो सब कुछ, वापस चले जाते हैं. फिर खान साहब ने कहा लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गई है, टीम ने कहा यार अब क्या करें, अब तो हार गए. तो बड़ी कंफ्यूजन में टीम खेली है. काफी ज्यादा कंफ्यूजन में खेली है. ये मेरा ख्याल है तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो नेशनल स्पोर्ट है ना, वो है अपनी टीम को बैश करना. जो बेचारा उठे खेले तो सबसे पहले ढूंढे कि यार कि कोई लक फैक्टर होगा, कोई बारिश हुई होगी, एज इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ क्रिकेट. किसी और टीम हम्म. की मैच में बारिश नहीं होती, कोई और टीम जो है वो गंदा नहीं खेलती. साउथ अफ्रीका का, पाकिस्तान का बुरा दिन हो सकता है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो साउथ अफ्रीका का बुरा दिन क्यों नहीं हो सकता अगेंस्ट न्यूजीलैंड? इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल. हर टीम को कुछ लक मिलती है, थोड़ी सी लक हमें भी मिल गई. बट आप ये डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान प्योरली सिर्फ लक पे आया है. वी हैव हैड गुड गेम्स, सम अनलकी गेम्स एज वेल, लेकिन हमने अच्छा परफॉर्म किया एंड टीम इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम. और यार पाकिस्तान का एनालिसिस एक हम उससे ले लें भाई, फाद से ले लें एनालिसिस. आप बता दें यार नहीं, किस तरह let ये him बात. talk please. Let him talk please. He's absolutely right. I mean, देखिए ना कि what's the maximum we've conceded in the entire tournament right now? 160. सॉरी, कितना हमने कंसीड या किया मैक्सिमम? हाँ, nobody, no हाँ, no team इंडिया has, को पहले मैच में. yeah, we have restricted everyone under 160. 160 is the highest we have conceded. Yeah, so you're exactly on point. के performance batting के अलावा otherwise I think we've been okay. हाँ, dominant performance नहीं रही है with the bat. जैसे Netherlands वाले मैच में I think हम लोग we just crossed the line a few overs. We just had to win and we completed the win. And और कौन सा मैच था दूसरा? बांग्लादेश वाला मैच ठीक ठीक था. उसमें yes they also self imploded. And कौन सा South Africa में, then I think that's where we actually started to gain some confidence. I think the match against South Africa was actually the टर्निंग turning point. पॉइंट. We came from behind. We actually, did a counter punch. और उससे से हमें मोमेंटम मिला है to the entire event, to be honest. वहां से अच्छा, onward. मुझे पता है साउथ अफ्रीका के मैच में ना, जो वो शदाब का नॉक था ना, उससे एक चीज याद आई थी. इफ यू रिमेम्बर, जो 2009 के वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हो ना, शायद अफरीदी टुक अ कैच ऑफ उमर गुल्स बॉलिंग. आई थिंक स्कॉट स्टाइरस बैट्समैन था, इफ आई डोंट गेट द बैट्समैन रॉन्ग. वो Yeah. पाकिस्तान का, सब कहते थे कि वो टर्निंग पॉइंट था टूर्नामेंट का. उस वक्त तक पाकिस्तान लगा था टूर्नामेंट से आउट होगा, ठीक है.
अगर उस टूर्नामेंट के आप पहले जो वार्म अप मैचेस हुए थे ना, जहां तक मुझे याद है उसमें भी इंडिया ने बहुत बुरा हराया था पाकिस्तान को वार्म अप मैच में, ठीक है। तो पाकिस्तान वाज ऑन द वे आउट, तो मुझे पता नहीं क्यों वो फीलिंग हुई 43 for 4, जब वो हमें शान आउट हुआ है, फोर्थ बैट्समैन शान आउट हुआ था, ये एग्जैक्टली। उसके बाद मुझे लगा था कि यार अब हमें उस मैच को जीतने की आपकी 10% प्रोबेबिलिटी थी। तो अगर आप प्रोबेबिलिटीज आगे लेके चलें पाकिस्तान के फाइनल के क्वालिफाई करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आई वंडर के वो क्या आती है, 1% से कम होगी प्रोबेबिलिटी। तो खैर इट्स नथिंग लेस द मिरेकल। Yeah. So I think वो जो 43 for 4 वाली situation उसके लिए you should have a small bit of a budget allocated कि bet 365 पे डाल दें या विलियम हिल बुक में किसमें डाल दें for us to make the final at least. जबरदस्त रिटर्न होने थे यार, जबरदस्त। Yeah, मेरा ख्याल है this is where we go wrong. We try and analyze Pakistan's cricket with probabilities and stats and law of averages and historic events. पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को in present analyze करना चाहिए on that day which team is taking the field. I think वो मैटर करता है। आपको कई दफा शुरू के 3 ओवर देख के पता चल जाता है कि पाकिस्तान की टीम किस माइंडसेट से आई है। आपको न्यूजीलैंड की मैच में जो फील्डिंग की उन्होंने, आई थिंक वो उसने चार्ज अप किसी मैच में नजर नहीं आ रहे थे आपको। ऐसे ही है इसी तरह तो वो आई यार, थिंक ये इसलिए असल में वो जीशान मैटर नहीं फील्डिंग की करता ज्यादा कि तारीफ इससे पहले करते हैं, क्या। हमारे जो फील्डिंग कोच है ना इनके खास दोस्त हैं। इसके अंडर हाँ, खेला भी है जीशान, तो उनकी खास कोशिश करते हैं तारीफ करने की, हाँ बिल्कुल सेकंड पेज में फील्डिंग अच्छी की है। अच्छा फात क्विकली, क्योंकि पाकिस्तान की जर्नी की बात करें, फाइनल में क्या देखते हो, बिकॉज आई हैव टू स्टिल क्वेश्चन फॉर यू एंड वी हैव 5 minutes टू कवर देम। पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में क्या देखते हैं, और फिर व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया। what went wrong for India? Okay, so पहले कौन सा cover करें? जो आपके Uh, दिल चाहे। yeah, Pakistan versus England is going to be a tough one, but because see the thing is that we know Indian cricket very well, right? And it's if it was England and India in the final, then I would have probably had an easier bet on England, maybe. But with Pakistan, the fact that we've played a lot of the guys play with them in different leagues, whether it's PSL, it's Caribbean League, it's the 100 in the UK, Big Bash में भी खेलते हैं साथ साथ। उल्टा भी अप्लाई करता uh, है, दे नो अस वेल एज वेल। तो बहुत सारी चीजें ऑफसेट करती हैं एक दूसरे को, जबकि आई थिंक इंग्लैंड हैज a better T20 infrastructure, right? अब देखें ना, वो David Milan is sitting outside, Mark Wood is sitting outside, Johnny Bairstow की तो किसी ने अभी तक बात ही नहीं की है, right? And I'm sure we're missing out another couple of यार names. बिलिंग्स नहीं खेलता, डकेट नहीं खेल रहा, डकेट नहीं खेल रहा, yes. जेसन रॉय नहीं तो है उनका। जेसन रॉय जेसन नहीं है। रॉय नहीं है। Jason Roy, I think he was like a butcher when he was in form, and this is only being based on form that he's been dropped. So देखा जाए तो infrastructure wise they're a lot better. Yes, I think fast bowling में depth ज़्यादा हमारी बेहतर है maybe, but batting firepower is definitely theirs. But as being a balance, I mean looking at balance, I think our side is a bit better that way. बिकॉज And very sorry, बिकॉज um, बैलेंस क्यों because बेहतर है हमारा, कि look, we आसिफ have अली बेंच पे बैठा हुआ है या कोई और वजह है। बैलेंस किस तरह वो कर रहा है, बैलेंस बाहर से। so when we started the tournament, we started with 5 bowlers, हाँ, right? With the sixth option not even being exercised. Now we are sitting with 7 bowlers who can potentially be utilized, right? So I think that changes the game for us. इंडिया के खिलाफ For भी मोहम्मद England, वसीम को होना चाहिए था, मोहम्मद वसीम को इंडिया के खिलाफ भी खेलना चाहिए था। उसको इंडिया के खिलाफ भी खेलना चाहिए था। उस वक्त फिर सिचुएशन काफी डिफरेंट होती। बट अभी राइट नाउ आई थिंक इंग्लैंड की स्ट्रेंथ ये कि नंबर 11 पे आदिल रशीद बैटिंग करने आता है। आदिल रशीद हैज द हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर ऑफ फर्स्ट क्लास 100 है, फर्स्ट क्लास 100 है उसकी। 180 का हाईएस्ट स्कोर है आई थिंक फर्स्ट क्लास में। उससे पहले बैटिंग करने आता है हु इज इट, क्रिस जॉर्डन आई थिंक आता है, सैम क्रिस करन जॉर्डन। आता है। सैम करन आता है, सैम क्रिस जॉर्डन आता है। Chris Jordan also has a first class century, by the way. हाँ, He has, and Sam Curran also. All these guys have first class centuries, right? So they have a very strong batting lineup. But ठीक है, वो भी हमारे सामने, we've seen them so many times, you know. So it's a very 50-50 game. But obviously, I'd बैटिंग like to put फर्स्ट money बॉलिंग on फर्स्ट, Pakistan. टॉस जीत के क्या करना चाहिए, Batting first. रन ऑन द बोर्ड, Batting फाइनल first. प्रेशर, आई स्कोर डोंट Yeah, थिंक yeah. इंग्लैंड वो चांस हमारे साथ लेगा जो उसने इंडिया के साथ लिया सेमीफाइनल में। दे विल नेवर सेंड अस इन। आई थिंक इंग्लैंड विल ट्राई एंड बैट अस आउट और Yeah. फिर वो जाएंगे उसके अंदर।
वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। आई थिंक मैच शुरू तब होगा जब इंग्लैंड की बैटिंग आएगी और हमारी बॉलिंग आएगी। दैट्स द ओनली चैलेंज इन दिस मैच। हमारी बैटिंग उनकी बॉलिंग एट पार ही है दोनों। उनकी हाँ बैटिंग वर्सेस आवर बॉलिंग इज वेयर द मैच इज। या अच्छा अच्छा फाद, अच्छा लास्ट 2 मिनट्स जल्दी से इंडिया, या अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू पाकिस्तान बट वी हैव ओनली 2 मिनट्स, तो इंडिया, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया? आई वाज एक्सपेक्टिंग एन इंडिया पाकिस्तान फाइनल. In fact, I was expecting India to be in the final, Pakistan not to be in the final. So I was quite wrong. But हाँ yeah I think if you look at the big picture from the last time they had a 10-wicket loss against Pakistan and until now there's only been 2-3 changes in the side, right? I mean, and I think the major guy missing was Bumrah. Bumrah. Other than that, I think they have not really. क्या नाम है? I mean, if you look at the entire campaign, if you minus Kohli, Sky, and Pandya's runs, right? Then up until the semi-final, you were hiding a lot of their problems, right? So they weren't exposed only because these guys were doing phenomenally well. All three of them. Pandya ने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर किया है, कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर किया है. Then Pandya had Sky had a few other good innings. किसी भी मैच में कोहली और राहुल ने शर्मा और राहुल ने परफॉर्म नहीं किया है, except for that game against Bangladesh where I think KL scored 50 plus. Rohit Sharma has been playing at the same place he plays his ODIs. So I think that's where they lost the game. And that's when they realized that England is conceptually ahead of them in T20s. Right? When they came out to bat, they had 180 to 200 in their mind. England, like the way they bat, the way they chased, it seemed like if they had gone first, they would have gone for 190 200. With 168, India thinking that this is a defendable score with this bowling lineup, I think this was quite far-fetched. So, Chalo. On that note, let's wrap up. Thank you so much, Fahad. So we'll have you again on the live program. We'll go live again in the evening for Pakistan's match. So we'll have you back again. Thank you, Fahad. Sounds good. Thank you. Thank you, Fahad. Nice having you. Take care. Bye bye. See you guys. Bye bye.